Hi there guys, how are you? अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं then in this video we'll discuss questions on literary theory, in particular structuralism. ठीक है? Remember that structuralism is one of the most important areas in literary theory and also one of the most misunderstood areas. So if you want to test your knowledge and also clarify some concepts, definitely watch this video. Now before moving ahead, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं then you can follow me on Telegram. ठीक है? And this is the link, Harsh Singh Sir Official. ठीक है? On Telegram. And this is a brief about me. Let me tell you that I've done my masters from Delhi University. ठीक है? I've also written UPSC Civil Services Mains with English Literature Optional. And one more announcement, if you are preparing for UGC NET for the December batch, then we are starting a new batch on the 8th of June. ठीक है? For any inquiries, just call or WhatsApp us on this number. Similarly, if you know anybody who is preparing for MA English entrance for next year, then also for this, we are starting a new batch on the 8th of June. Now coming to the questions. First question, which of the following is not a key tenet of structuralism in literary theory? Universal patterns underlie all narratives. This is the first option. Language is closed, rule-governed system. Then after that, C, emphasis on authorial intent and biography. And D, focus on form over content. Now question आप ध्यान से पढ़ना. Which of the following is not a key tenet? First option looks correct. Language is closed, rule governed. This also looks correct. Focus on form over content. This also to some extent looks correct. But the option that looks least correct or incorrect is this one. Emphasis on authorial intent and biography. इस पे तो बिल्कुल ध्यान होता ही नहीं है structuralism में, ठीक है? So this is not one of the key tenets of structuralism, ठीक है? So the answer is C. Now let's read little bit. Structuralism focuses on universal patterns, ठीक है? अगर आपने structuralism पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए. The systematic nature of language and the form of texts rather than their content. It deliberately avoids emphasizing the author's intent, ठीक है? ये सब तो है ही नहीं उसमें. Or biography, as it prioritizes the text structure and its place within larger systems like genre or culture. ठीक है? Next question. Which theorist is most closely associated with the concept of signifier and signified? ठीक है? A. Roland Barthes, B. Ferdinand de Saussure, C. Claude Lévi-Strauss, and D. Vladimir Propp. Now keep in mind that all of these are theorists in structuralism, so आपको पता होना चाहिए इन सब के ideas के बारे में, इन सब के works के बारे में. Of course, for this question, there is only one correct answer. ठीक है? And what is the correct answer? The correct answer is B. Ferdinand de Saussure. ठीक है? ये तो बहुत simple है. ठीक है? बड़ा बाकी जो ऑप्शंस हैं इनको निगलेक्ट मत करना, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी पढ़ना. ठीक है? सो फर्डिनेंड डी सॉसियर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिग्निफायर. ठीक है? द फॉर्म ऑफ अ वर्ड. ठीक है? एंड सिग्निफाइड द कॉन्सेप्ट इट रिप्रेजेंट्स. ठीक है? ये मतलब होता है इसका. ठीक है? फाउंडेशनल टू स्ट्रक्चरलिज्म. Barthes and Lévi-Strauss built on this idea while Propp focused on narrative functions in folk tales. Okay? Next question. In structuralist theory, what do binary oppositions primarily help to analyze? A. The emotional impact of a text. B. The historical context of a narrative. C. The structural contrasts that create meaning. And D. The psychological motivations of characters. ठीक है? इसमें देखो what do binary oppositions primarily help? Now अगर आप सिर्फ कुछ important words पे भी ध्यान दो, ठीक है, तो उससे भी आप elimination method से आंसर निकाल सकते हो. यहाँ पे इमोशनल इम्पैक्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये भी नहीं हो सकता. यहाँ पे देखो साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये तो साइकोएनालिटिक थ्योरी में होता है. सो बेस्ट ऑप्शन इज सी, द स्ट्रक्चरल कंट्रास्ट्स दैट क्रिएट मीनिंग. ठीक है? सो इस तरीके से अब एग्जाम में सॉल्व करना. इवन इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर फुली, देन यू कैन अराइव एट द करेक्ट आंसर बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. ठीक है? सो सी इज द आंसर हियर. ठीक है? सो बाइनरी ऑपोजिशन सच एज गुड एंड इवल, लाइट एंड डार्क आर सेंट्रल टू स्ट्रक्चरलिज्म एज दे रिवील हाउ मीनिंग इज जनरेटेड थ्रू कॉन्ट्रास्ट्स विद इन अ टेक्स्ट स्ट्रक्चर. For example, in Romeo and Juliet, the opposition of love-hate drives the narrative. ठीक है? Next question. Which of the following is a key phrase coined by structuralist theorists? A. Deconstruction. B. Langlois and Parole. C. Reader response. And D. Intertextuality. यहाँ पे देखो structuralist theorist बोल रहा है. ठीक है? So it can't be C, it can't be D. This is related to that, but this is more related to post-structuralism. ठीक है? So here the correct answer is B, Langlois and Parole. See, Saussure's distinction between Langlois, ठीक है? Langlois होता क्या है? The abstract system of language. ठीक है? और पैरोल क्या होता है? इट्स इंडिविजुअल यूज, उसे कहते हैं पैरोल. दीज आर फाउंडेशनल स्ट्रक्चरलिस्ट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है? डीकंस्ट्रक्शन एंड इंटरटेक्सचुअलिटी आर एसोसिएटेड विद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, व्हाइल रीडर रिस्पॉन्स इज अ सेपरेट क्रिटिकल अप्रोच. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच थियरिस्ट अप्लाइड स्ट्रक्चरलिज्म टू एनालाइज मिथ्स एज सिस्टम्स ऑफ साइंस? A. Northrop Frye. B. Roland Barthes. C. A.J.
ग्रीमस, ठीक है, एंड डी व्लादिमीर प्रॉप. नाउ द करेक्ट आंसर हियर इज रोलैंड बार्थ्स. ठीक है, यहाँ पे देखो, ही इज द वन हु एनालाइज्ड मिथ्स और माइथोलॉजी. ठीक है, नाउ रोलैंड बार्थ्स in the work Mythologies analyzes myths as systems of science that convey ideological meanings. Vladimir Prop, ठीक है, focused on folktale structures. Grimus मतलब A.J. Grimes on narrative semantics and Northrop Frye on archetypal patterns. But Barth specifically explored myths in a cultural context. ठीक है, next question. What does the structuralist concept of underlying structure refer to? ठीक है, underlying structure. ये भी जो फ्रेज है ये कई बार स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ने को मिलता है. सो इफ यू हैव रेड स्ट्रक्चरलिज्म यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस फ्रेज. ठीक है, ए द एक्सप्लिसिट थीम्स इन अ लिटरेरी वर्क, बी द यूनिवर्सल ग्रामर और पैटर्न्स इन अ narrative, C the historical events influencing a text, and D the author's personal experiences. Now these are very easy options. ठीक है, The question is not difficult अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो. Author's personal experience ये नहीं हो सकता, historical events ये नहीं हो सकता, explicit themes in a literary work ये भी नहीं हो सकता. यहाँ पे एक ही ऑप्शन ही है जो possible है, universal grammar और patterns in narratives. This is what underlying structure refers to. ठीक है, so the underlying structure in structuralism refers to the deep universal patterns or grammar that govern narratives such as recurring plot elements, मतलब hero's journey for instance, and it is not concerned with themes, historical events or authorial experiences. ठीक है, next question. Which of the following works is most associated with structuralist analysis of narrative functions in folktales? A S/Z, ठीक है, ये वर्क का नाम है. ठीक है, S/Z by Roland Barthes. B. Morphology of the Folktale by Vladimir Prop. C. Anatomy of Criticism by Northrop Frye. And D. Course in General Linguistics by, ठीक है, by Ferdinand D. Saussure. कौन सा होगा इनमें से? नाउ आंसर बहुत ही आसान सा है. ठीक है, नैरेटिव फंक्शंस इन फोकटेल्स. Here the correct answer is B. Morphology of Folktale. ठीक है, एक वर्क का नाम है. ठीक है, by Vladimir Prop. So Vladimir Prop's Morphology of the Folktale identifies recurring narrative functions in folktales such as the hero's departure, villain's defeat, a key structuralist contribution. And Barth's work S/Z, ठीक है, analyzes a single text. Northrop Frye's work focuses on archetypes and Saussure's linguistic. ठीक है, next question. Which concept associated with A.J. Grimes, ठीक है, analyzes narrative roles and relationships. ठीक है, narrative roles and relationships. Generally इनको इस तरीके से हमेशा आप देखोगे. ठीक है, जनरली द ऑथर इज रेफर्ड टू एज A.J. Grimes. ठीक है, A. आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, B. semiotic square, C. myth and ideology, D. signifier and signified. Now unless of course you have read about this author and his contribution, you will not be able to answer it. It's not that easy, but हाँ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है. You can still arrive at the answer by looking at the elimination method or applying the elimination method. So archetypal criticism नहीं हो सकता, myth and ideology not likely. ठीक है, signifier, signified not likely. The only likely thing is semiotic square. ठीक है, so this is the correct answer. So the correct answer is B. ठीक है, then Grimes developed the semiotic square and actential model to analyze narrative roles such as hero, opponent and their relationship, a structuralist approach to meaning. Archetypal criticism is linked to Frye, Northrop Frye मतलब, myth and ideology to Roland Barthes and signified to Saussure. ठीक है, now next question. Which of the following is a limitation often attributed to structuralism in literary theory? Limitation. What is the limitation of structuralism? ठीक है, now since there was a limitation in structuralism or plenty of limitations in structuralism, that is why from structuralism we move on to post-structuralism. ठीक है, so what is the limitation? A. Overemphasis on reader interpretation. B. Reduction of texts to mechanical patterns. C. Focus on historical accuracy. D. Reliance on psychological analysis. इनमें से कौन सा आंसर होगा? Now here the correct answer is B. ठीक है, reduction of text to mechanical patterns. ठीक है, because if you see historical accuracy पे तो focus है ही नहीं, psychological analysis पे तो है ही नहीं, रीडर्स इंटरप्रिटेशन पे तो है ही नहीं, तो बचा गया ए बचा ना. सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, रिडक्शन ऑफ टेक्स्ट टू मैकेनिकल पैटर्न्स. ठीक है, so critics of structuralism argue it reduces complex literary works to universal patterns, potentially overlooking unique or subjective elements. It does not prioritize reader interpretation, historical accuracy or psychological analysis, which are closely associated with other theories. ठीक है, next question. Which theorist's work bridged structuralism and anthropology by analyzing universal myth structures? A. Ferdinand D. Saussure, B. Claude Lévi-Strauss, C. Roland Barthes and D. Northrop Frye.
This is an easy question and the correct answer is here is Claude Lévi-Strauss. ठीक है, he is the one who studies this. ठीक है, यूनिवर्सल मिथ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी एंड स्ट्रक्चरलिज्म को ब्रिज करते हैं ये. ठीक है, सो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस अप्लाइड स्ट्रक्चरलिज्म टू एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, एनालाइजिंग मिथ्स टू अनकवर यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स अक्रॉस कल्चर्स, ultimately influencing literary theory. ठीक है. Saussure focused on linguistics, Barthes on semiotics and literature, and Northrop Frye on archetypal criticism. Okay? So just go through these questions once again. Okay? It will be very helpful. And one small announcement, if you know somebody who is preparing for Jamia's PG English entrance, then we are starting a new batch. So just call or WhatsApp us on this number.